Okay, very good morning. I'm Dr. Ritika Singh. I'm the senior resident in the department. So today's lecture will be assessment in emergency setting. See, first of all, the thing which you are going to face even after your completion of your MBBS, emergency setting is something which you all are going to face in your life. Whether it is your clinical posting time, whether if you are posted elsewhere in a separate institute, or when you're doing your PG curriculum activities as well. Emergency is something which everyone from every department is going to face. And managing or assessing the patient, especially this assessment of the patient in emergency setting, is quite tricky. It will be a little different from how you see patients in the ward. Okay, patient might not be that calm, patient might not be that cooperative. All right. So we'll be covering it under the following heading: a brief introduction, and then what are the common causes with which the patient present in the psychiatry department. How are we going to assess will constitute the next few slides, and brief introduction about how we manage the patient and legal aspects in emergency setting. So moving on further, introduction part. When we talk about psychiatric emergencies, it refers to acute disturbances in thought, behavior, mood, or perception that require immediate intervention and to prevent harm to the patient or other. So some or the one form or the other, whether the behavior of the patient is disturbed, how he is thinking, how he is perceiving the world around him, how he is acting, okay, the level of aggression he has towards others, towards him or herself as well, is something which constitute the psychiatric emergency. The case is something which you'll see in psychiatric emergency are going to correlate with the definition. And very important part is that you have to prevent the harm which the patient can do to themselves and to the others or to the property as well. Okay. So these crises can present in various settings, including emergency, inpatient unit, and community setting. Apart from emergency setting, even in ward, sometimes the patient, if you might have seen the ward, some patient might get aggressive, some patient might get unstable behaviorally. Even in community setting, okay, it could be because of any reason, maybe underlying psychiatric illness, maybe underlying intoxication, maybe anything, okay, any stressor. Patient can get violent, aggressive at any of the settings, but we are dealing here with emergency department. The nature of psychiatric emergencies varies widely, ranging from acute psychosis, suicidal ideation, violent aggression, catatonia, to severe anxiety and withdrawal symptom. Okay, these are some of the psychiatric presentation of psychiatric illness. There can be some of the psychiatric presentation of medical or neurological illnesses as well, which is a key point where you have to understand that here psychiatric intervention is required or medical intervention is required. This is something you will learn when you will be posted in emergency department, how to differentiate between the two. So when we talk about epidemiology of the psychiatric illness, there are certain studies which show, which says that approximately 20% of hospital emergency visits are due to acute mental health. And substance-related disorders, including alcohol and other drug-induced, whether intoxication or withdrawal condition, are one of the major causes कि psychiatric की patient emergency में आएगा. Now, because of this increasing burden of mental health crisis globally, even in India, emergency psychiatric care has become a crucial aspect of healthcare. So, the aim is to recognize and address psychiatric emergencies promptly, can prevent long-term complication, reduce the risk of harm, and improve patient's outcome. All right. Now, what are the causes of psychiatric emergency? Causes can be aggression and violence. Okay. Now, I'm not talking about per se the disease. This is just what are the symptoms or the causes with which the patient is going to present in the psychiatric emergency. Patient can be aggressive, can be acutely violent. Okay, it could be now this could be new onset illness or it could be the exacerbation of any previous illness, which can be due to non-compliance with medication or overall even the patient is compliant, then also the symptoms have aggravated. डोज सही से नहीं ली है, स्किप हो गई है डोज. इट कुड बी एनी अदर थिंग. ओके, और स्विच ऑफ द इलनेस एज वेल. ऐसा नहीं है कि एक इलनेस है तो दूसरी नहीं आ सकती. ठीक है, सपोज बाइपोलर का फेस चल रहा है, डिप्रेशन का फेस है, स्विच कर गया मेनिया के फेस. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट acute aggression and violence. Catatonia is something in which patient might refuse to eat, speak, he will be
having a वैक्सी flexibility, posturing बना लेगा patient abnormal position में, कुछ खाएगा नहीं, बोलेगा नहीं. So this is also sometimes very disturbing for the attendant of the patient because they don't understand. For them, the patient is just quiet, not talking, not eating. He might sometimes catatonic patient can even be aggressive. ओके आपका शांत हुआ उसके झट के बाद इतना एग्रेसिव हो गया कि पेशेंट वायलेंटली एग्रेसिव हो गया अपने सामने वाले इंसान so this is also something to be kept in mind then very important suicidal attempt suicidal ideation of behavior with which the patient can present with in psychiatric emergency now these ideation can be with plan and intent. Now attempt which can lead to self-harm, overdose, or hanging. Okay, these are all the cases which will the patient be presenting in psychiatric emergency. Then substance-related can be intoxication, withdrawal, overdose, or behavioral symptoms. Especially with cannabis, you might have seen there are many people who are prone to cannabis psychosis. Cannabis is notorious to aggravate this schizophrenia part of the illness as well, and to create cause a separate cannabis-induced psychosis as well. Okay, so people who are sometimes latent schizophrenia can come out even after taking the first dose of cannabis intake. Now, very important, medical condition and adverse drug effects are also something which is responsible for the patient who present to the psychiatric illness. Acute onset disorientation of time, memory loss acute onset है, okay? So hallucination हो सकता है, especially visual hallucination अगर हो रहे हैं, तो you should keep in mind कि organic cause तो नहीं है, कोई head injury तो नहीं है, कोई stroke या कुछ ऐसी चीज तो नहीं हुई है patient को, okay? They can point towards delirium. Now, causes can be metabolic disturbances, infection, drug, certain drug like steroid and antitubercular are notorious to cause some psychiatric illness symptoms. Electrolyte disbalance, neurological disorder. Next is adverse drug related to psychotropic drugs. For example, lithium toxicity can happen. Clozapine side effects are very notorious. Other than this, neuroleptic malignant syndrome is one of the fatal side effects of the antipsychotic drugs. Okay, serotonin syndrome, lithium toxicity are fatal complications. Now, another point is psychosocial stresses, some acute loss. This you would have seen in your community as well. अचानक से किसी की कोई शॉक न्यूज मिली, शायद सपोज किसी की डेथ हो गई है, तो सामने वाला पेशेंट टेंड्स टू बेहोश हो जाता है आप फॉर इन कॉमन लैंग्वेज. So in that case also patient might complain of chest pain, acute chest pain, acute unresponsiveness. For that period of time also the relatives will just carry the patient and bring to the emergency ward. Now, this is also one of the psychiatric emergency the patient can present with. You don't know what to do. अभी इसको psychotropic drug दें कि उसको sedate करें कि क्या करें. Sometimes just waiting for the patient to calm down can also help. Okay. Now, acute life crisis like grief, relationship issue, financial problem, or violence, domestic abuse or sexual abuse. Severe autonomic arousal, chest tightness, breathlessness due to stress. So, panic disorder, acute stress we should know how to differentiate it from medical condition like MI. Okay, sometimes the symptomatology will be same. So do not get confused कि psychiatric patient है तो उसको medical illness नहीं हो सकती. Okay, this is something very common कि anxiety का patient है नहीं तो ये chest pain इसको anxiety की वजह से ही हो रहा है. You have to learn how to differentiate between them. If necessary, whatever investigations are required, you should take it in as soon as possible. Sudden loss of sensory motor function, sudden loss of memory, कोई neurological shock तो नहीं लगा है. Now, in special population, psychiatric emergency, postpartum psychosis, depression are something which you should keep in mind. Delivery के बाद अचानक से patient is very hostile towards the baby, is very suspicious towards other, is not taking care of herself. So, postpartum depression and psychosis are other. Geriatric emergency, especially after dementia, delirium is something, and depression is something in geriatric population which is quite common. Delirium is one thing which should be kept in mind because very small thing, even the urinary tract infection, which for a general population, for an adult population is normal, but for an elderly population can lead to delirium. Okay. Similarly, severe diarrhea can cause certain complication in geriatric population. Okay. Depression is something which is very much increasing in the geriatric population along with suicidal ideation and suicidal intent. Then childhood psychiatric emergency, severe conduct disorder, ADHD crisis, or if there is some child with behavioral
intellectual disability, he might show behavioral disturbances. So this is something special population which can come in psychiatric emergency. Now, what are the principles you should follow when you are assessing a patient in emergency department, psychiatric patient in emergency department? First and foremost is ensuring safety. Then you have to have rapid and systemic assessment and management. There are certain ethical and legal consideration and multidisciplinary approach. What do we mean by ensuring safety? Safety is something which should be taken both for patient and the healthcare professional, and of course the other people who are accompanying him. Okay. So first of all, patient safety. You have to constantly monitor the patient. If you are suspecting patient self harm कर सकता है या harm to other कर सकता है या past history रही है, do not leave the patient unattended. Okay. Check the belonging of the patient purse, अगर कुछ है, कहीं कोई चाकू लेके तो नहीं आया, कोई गन लेके तो नहीं आया है साथ में, ठीक है, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कैरी कर रहा है. इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, पेशेंट की सराउंडिंग से कुछ भी चोट लगाने वाली प्रोग्राम दूर तो नहीं है. आईवी ड्रिप से भी पेशेंट अपने आप को मार सकता है, ठीक है. देयर हैव बीन केसेस जहाँ पेशेंट ने चाकू या फोक या चम्मच से भी हार्म किया. तो यू शुड कीप, अगर पेशेंट इस स्टेज पे है कि एग्रेसिव है, वायलेंट है, सेल्फ हार्म या हार्म टू अदर्स के उसमें है, as much as possible keep the neutral environment for the patient. Ensure adequate lighting and low stimulation area. Supervised medication to be given to such patient. दवाइयाँ भी पेशेंट के पास नहीं रखनी, ठीक है ना. Next, safety of the others, especially healthcare professional and the paramedical staff जितना भी चल रहा है. Maintain safe distance from the patient. Do not turn your back towards the patient. Stay calm and composed. Maintain a non-threatening, confident posture. Watch for early warning signs like पेशेंट बहुत बार आप आएगा इमरजेंसी उसमें देखोगे बहुत तेज कर रहा है, तेज तेज चल रहा है, अपना फिस्ट कहीं और मार रहा है, धमका रहा है, गालियां बक रहा है, तो डू नॉट टेक इट लाइटली. दिस माइट बी द साइन ऑफ इम्पेंडिंग एग्रेशन व्हिच कैन कम इन द नियर फ्यूचर. ऑलराइट, स्टे काम एंड कंपोज. एंड आप पेशेंट से अगर बात भी कर रहे हो तो आर्गुमेंटेटिव नहीं बनना है, ठीक है. आपको चैलेंज नहीं करना है पेशेंट को किसी चीज के लिए. एंड इफ पॉसिबल उसको आपके हाथ अगर विजिबल हो, बहुत बार पेशेंट साइकोसिस में पेशेंट अगर सस्पिशियसनेस है, पैरानोया है, आपने अपना हाथ पॉकेट में भी डाला तो उसमें भी सस्पेशन लग सकता है, ये बात कहीं कुछ निकाल रहा है. फोन पकड़ लिया तो उसमें भी बोल सकता है तो मुझे रिकॉर्ड करो, आपका फोन पकड़ के फेंक दिया या आपके सर पे मार दिया. तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है. सो यू शुड बी वेरी कॉशियस अगर आपको ऐसा पेशेंट दिख रहा है. वॉच फॉर अर्ली वार्निंग साइन लाइक वर्बल थ्रेट, साउटिंग और पेशेंट. Always have an accessible exit route and avoid being trapped. ऐसा मत करना कि एक छोटे से कोपचे में दिखा के बैठे हुए हो साइड में, जगह ही नहीं है भागने की. So you should be in a place where there is the exit route is quite nearby and handy to you. All right. Never manage a violent patient alone. Please have support system. You can have paramedical staff. You can have security guard. Even the patient's attendant can help you guide how it calms down the patient. Okay. Be prepared with treatment measure. If you are quite sure that patient is not going to be calm by talking or by just asking him to sit, ask your paramedical staff to be prepared with medication, whether chemically restrain you're restraining the patient chemically, or if you need to physically restrain the patient, gather the security around if needed. Okay. Now, very important is rapid and systematic arrangement. See, emergency is not the department where you can take your time कि हम evaluate करेंगे, आराम से बात करेंगे. कुछ mandatory laws भी होते हैं कि patient को emergency में इतने घंटे के लिए, इतने दिन के लिए रखना है, उसके बाद नहीं रख सकते. And कुछ patients ऐसे होते हैं जो कि immediate treatment डिमांड करते हैं, ठीक है. एक घंटे के अंदर पता चला आपने patient बोला मैं एक घंटे के बाद देखूंगा, तब तक patient ने वहां पे एकदम चीजें फेंक दी है, लोगों को harm कर रहा है. तो this is something which should not be done. So implementing a triage system, I guess you all are aware of what triage is. How do we categorize the patient according to the need, whether it is emergency need, urgent, non-urgent. So this is something which should be done in emergency for psychiatric patient also. Example, if you're suspecting कोई life threatening emergency है, patient overdose से आया है, poisoning से आया है, hanging की complaint से आया है, या फिर कोई आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, तो मैनेज इट फर्स्ट. डिलीरियम का पेशेंट है, ठीक है ना, एनएमएस है पेशेंट को, okay. Immediate interventions are required. Immediate crisis should be handled before psychiatric evaluation. गैस्ट्रिक लवाद, पेशेंट काट कूट के आया है अपने आप को, लेकिन अभी शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक साइकियाट्रिस्ट आएगा हम बात करेंगे, उससे पहले हम इसकी ड्रेसिंग ही नहीं करेंगे. ड्रेसिंग इज समथिंग जो पहले हो जानी चाहिए, ठीक है.
पॉइजनिंग का केस है, चलो लड़ाई हो गई थी इस वजह से आया था, साइकाइट्रिस्ट बात करेगा, बट लवाज आप पहले करके रखेंगे, अगर कोई मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज है वो होके रहेंगी। सम रेड फ्लैग्स यू शुड कीप इन माइंड कि which points towards the organicity or towards the medical or neurological side, though the patient might have psychiatric symptoms. Okay, disorientation to time and place, acute onset है, patient को समझ में नहीं आ रहा है, confusion है, ठीक है, delirium की तरफ point out कर सकता है. Again, similarly, visual and olfactory hallucination can point toward neurological complications, seizure हो सकता है, delirium हो सकता है. Fluctuating or altered consciousness, recent history of fever है, head trauma है, memory impairment है, कोई सीजर की हिस्ट्री तो नहीं है, और कोई recent use of medication or substance with neuropsychiatric adverse effect, हाई डोज स्टेरॉइड तो नहीं चल रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में भी बहुत बार ऐसी दवाइयां होती है जिससे कोई साइकाइट्रिक सिम्टम आ जाते हैं, ये सब तो नहीं चल रहा, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड. Next is legal and ethical consideration. We'll see them in later slides as well. Just for your knowledge, please respect patient's privacy and confidentiality. There are many time patient uncompromised condition में होगा, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करनी है कि पेशेंट को कैसे एक डिग्निफाइड तरीके से अप्रोच करना है. प्रोटेक्ट पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन वाइल इंश्योरिंग सेफ्टी. आप हर किसी को बताते नहीं फिरोगे ये वो पेशेंट है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. कॉन्फिडेंशियलिटी यू विल हैव टू मेंटेन. देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, ठीक है, जहाँ पे एफआईआर करने की जरूरत है, या जहाँ पे पॉस्को का केस आ रहा है, अगर कोई चाइल्ड आ रहा है और सेक्सुअल अब्यूज का है, तो जहाँ पे मैंडेटरी रिपोर्टिंग है तो वो आपको ध्यान में रखना है. जहाँ पे पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आपका जो इन्फॉर्मेंट है जिसको हम नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो वो चीजें आपको पता करनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. अदर देन साइकियाट्रिस्ट, सबसे पहले तो इमरजेंसी मेडिसिन में जो आपका डॉक्टर पोस्टेड है ईआर में, उनका कैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा अप्रोच ले रहे हैं. देन साइकियाट्रिस्ट है, इफ एट ऑल रिक्वायर्ड फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को तो नहीं देखना है, फैमिली केयर्स को या कैंप केयर गिवर है उनको कैसे साइको एजुकेट करना है. दिस इज समथिंग एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन माइंड. ओके, now, how do we assess the patient in emergency setting? First of all, like every emergency condition, triage and initial assessment should be there. Then history taking, physical examination, mental status examination, risk assessment is something you should keep in mind, and lab and diagnostic test. So already told to you कि rapid assessment and safety risk, suicidal है, patient homicidal है, कोई harmful चीजें तो नहीं साथ में रखनी है, patient को अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग कोई आपको न्यूरोलॉजिकल साइन तो नहीं कर रहे हैं कि आप एक साइकाइट्रिस्ट को देखना है कि आपको न्यूरो की साइड को उसको रेफर करना है या मेडिसिन साइड रेफर करना है. दिस इज समथिंग you should be made in the initial stage. Next is vital sign. If patient is permitting, then vital sign should be taken to monitor for hypoxia, hypoglycemia, कोई sepsis तो नहीं है, कोई intoxication या withdrawal के signs तो नहीं है, कोई toxicity के sign तो नहीं है, ठीक है. Please be केयरफुल कि पेशेंट मेडिकली स्टेबल है. पेशेंट चेस्ट पेन कह रहा है कि नहीं नहीं एंजाइटी है, पता चल रहा है उसके वाइटल्स ही नहीं मिल रहा है, पेशेंट बहुत प्रेस्पायर कर रहा है, एमआई हो गया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये सब चीजें नहीं करनी है. प्लीज बी इंश्योर कि मेडिकली पेशेंट स्टेबल है. देन साइकियाट्रिक रोल बाद में आता है. Now, history taking, okay, now see point by point, we'll see. Do not come to the conclusion based on the content of emergency call. आपको कॉल आया इमरजेंसी, मेरी साइकाइट्री का पेशेंट है, बहुत चिल्ला रहा है, ठीक है. अब आपने इसके बेसिस पे अपने आप से कंक्लूजन मांगा, अच्छा हो सकता है साइकोसिस हो सकता है मेनिया, बट प्लीज डू नॉट मेक अ डायग्नोसिस जस्ट बिकॉज आपको एक कॉल आया है कि पेशेंट का ये सिम्टम है. until unless you talk to the patient, you collect the history, you evaluate the patient. Familiarize yourself with patient information. ठीक है, आप गए जाते जाते तो आपको जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर उन्होंने पहले बता दिया, अच्छा ये पेशेंट बहुत एग्रेसिव है, 2-3 लोगों को पीट के आया, हाथ में चाकू भी पकड़ा हुआ है, तो यू आर क्वाइट अवेयर कि अच्छा इसके पास मुझे अकेले नहीं जाना है, इससे थोड़ा दूर दूर से बात करनी है, इसके पास हम करने का सामान है, तो हमको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है. Give some time and space to patient who at first refused to talk. There might be patient जो certain कोई स्ट्रेसर है, अभी कोई क्राइसिस आई है, फाइनेंशियल स्ट्रेसर आ गया है, कोई ग्रीफ के पीरियड में है, हो सकता है वो उस वक्त बात ना करें, मे बी बाद में बात करें, तो उसको फोर्स या कोक्स नहीं करना कि अभी बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मे बी थोड़ा टाइम देंगे तो पेशेंट आपसे खुद बात करने लग जाए. Gather information from relevant informants जो पेशेंट को अकम्पनी कर रहे हैं, फैमिली मेंबर, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव. देयर आर मेनी टाइम पेशेंट आपको रास्ते में घूमते हुए पेशेंट को कोई पुलिस वाले लेके आ जाएंगे, ठीक है. एट दैट उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी,
but at least they can tell you at what condition they found the patient, who informed them about the patient, from how many days the patient is roaming in that district, what is the nutritional status, well, while the patient was being brought to the emergency department, what was his behavior at that time. So this information can also be collected. एंड प्लीज डॉक्यूमेंट द इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। इफ अगर पेशेंट आया, आपको इंजरी लग रही है पेशेंट की कि हाँ यहाँ पे इंजरी है, तो वो भी डॉक्यूमेंट करनी है। तो कल के दिन यू इट कुड बी सेड कि भैया ये तो आपने मारा है, भैया हमारा पेशेंट तो ठीक था, आपने इमरजेंसी में मार के भेजा है पेशेंट को। प्लीज अपना पेपर वर्क, अपना डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना है। रिकॉर्ड पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन, बहुत बार स्पेशली मेडिकल लीगल केसेस में आपको आइडेंटिफिकेशन पेशेंट की आधार कार्ड, वैसे तो whatever your OPD card, the emergency card will be made, it will be based on Aadhaar card, but you'll have to also document it in certain medical legal cases along with mark of identification. Now, then we'll come on to then the natural history taking जो process होता है, reason for presenting to the emergency. If possible, document in patient's own language, or then if patient is not willing to give the history, informant's language. Okay. You'll in brief you'll ask about onset, duration, what are the triggering event, how is the severity, what are the fluctuations of current symptom, and what especially what happened at this particular time कि उसको दौड़ के इमरजेंसी में लेके आना पड़ा। अगर ये बिहेवियर 3-4 दिन से था, लेकिन अभी क्या हुआ, 3-4 दिन से गुस्सा कर रहा था, लेकिन आज उसने अपने पापा को थप्पड़ मार दिया। दिस इज समथिंग। अब जो ये जो फिजिकल असॉल्ट वाला चीज, इसके लिए पेशेंट को आप वहां पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, कोई सब्सटेंस यूज हिस्ट्री तो नहीं है, सिमिलर बिहेवियर पास में तो नहीं है। ठीक है, पास हिस्ट्री ऑफ वायलेंस या सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं है, पास साइकेट्रिक हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, कोई मेडिकल या कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन या दवाइयां तो नहीं चल रही है। अदर देन फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेसर, पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। Next is your physical examination. Monitor vital signs of the patient, which we have already concluded कि आपको vitals patient को stabilize करना ज़्यादा important है। If possible, if patient permits, systemic examination में severe stress पे अगर hypoxia suspect कर रहे हो, CNS में कुछ दिक्कत तो नहीं है। Especially look for the sign relevant to current presentation. For example, benzodiazepine या फिर alcohol overdose से आ रहा है, respiratory depression तो नहीं है, कोई ड्रग यूज किया तो कोई इंजेक्शन मार्क्स तो नहीं है, प्यूपिल देखिए अगर ओपियोइड पॉइजनिंग आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। और कोई न्यूरोलॉजिकल चीजें सस्पेक्ट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ट्रेमर्स तो नहीं है, कोई सेरिबेलर साइंस तो नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी के लिए भी ये सब चीजें हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज योर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. Now, this should also be very structured. If patient is how cooperative patient, it depends on them. Structured assessment of appearance and behavior. How is the psychomotor activity? Speech कैसी है, बात कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना guarded है, कोई guarded मतलब अपने आप को बता नहीं रहा है आपको अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, हाउ इज ही, हिज जर्नल बिहेवियर कैसा है, आपको अपने आप से बोलते हुए हंसते हुए तो नहीं देख रहा है, अग्रेसिवली गालियां तो नहीं दे रहा है, सेल्फ स्माइलिंग है, ये सब चीज तो नहीं है। ठीक है, if the situation and the patient permits, you can go on for higher cognitive function, judgment and insight. Examination of an uncooperative patient we have already dealt in our previous lectures. You can go through that. Kirby's method होता है, इसमें आपको ज्यादातर observation method है। You'll have to observe patient की facial expression, उसका movement कैसा है, उसका speech कैसा है, उसका smile कैसा है, उसकी खुद से काम करने की tendencies कैसी है। This is mostly observation based. Risk assessment both for harm to self and harm to others should be evaluated. For example, current suicidal ideas तो नहीं है कोई, then you'll have to question about what were the plans। अगर कुछ अपने आप को सुसाइड करने के लिए पेशेंट प्लान कर रहा था, उसकी लिथैलिटी कितनी है, इंटेंसिटी कैसी है। कभी कभी पेशेंट इंटेंशन सिर्फ इतनी होती है कि मुझे पेन फील करना है, स्पेशली आप ये कोई स्ट्रेस होगा, क्राइसिस होगा, या फिर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या ट्रेट्स होंगे, उसमें पेशेंट सुपरफिशियल इंजरीज ज्यादा करेगा रेदर देन यहाँ पे लिथैलिटी भी कम हो गई और इंटेंट भी खुद को मारने का नहीं था। बट एक पेशेंट है जो प्लान कर रहा है कि घर वाले सब चले जाएंगे तब मैं अपने आप को आई एम प्लानिंग टू हैंग माई सेल्फ। तो यहाँ पे लिथैलिटी भी है कि हैंग करना, और इंटेंट आई हैव टू किल माई सेल्फ। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड। इस चीजों के ऊपर अन पेशेंट टेंड्स टू गिव सर्टेन साइंस, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट टेंड्स टू गिव सर्टेन साइंस। लाइक कोई पेशेंट है बहुत डिप्रेशन में, अपना बिल बना देते हैं कि आई एम मेकिंग माई विल, दे विल गिव अवे देयर गुड बिलोंगिंग्स, अपने दोस्तों को गुड बाय मैसेजेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो डोंट इग्नोर दीज साइंस, ओके।
Active or passive thoughts of suicide, past suicidal ideas, attempt including interrupted one, past history अगर suicidal attempt की है या ideas की है तो chances होते हैं कि बाद में भी वो patient करेगा, ठीक है। कोई attempt किया था लेकिन उसको रोक लिया गया, this is also very significant. सेल्फ हार्म बिहेवियर कैसा है, इम्पल्सिव कितना है पेशेंट का, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैसा है, कि ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी बातों में सेल्फ हार्म करने लगता है, उसके मन की बात नहीं हुई, या फिर छोटा सा क्राइसिस उसके लिए बहुत बड़ा होता है कि उसको डील करना नहीं आता तो उसको बहुत एक्सॉल्टिंग लगता है। सिवियर होपलेसनेस तो नहीं है ये आपका, देयर आर सर्टेन स्केल्स फॉर द असेसमेंट व्हिच विल नॉट गो थ्रू इट, बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड। पैथोलॉजिकल गिफ्ट तो नहीं है, फैमिली में कोई सुसाइडल बिहेवियर या सुसाइडल अटेम्प्ट की बिहेवियर हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पर्टिकुलर करेंटली स्ट्रेसेस तो नहीं है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ वार्निंग साइंस लाइक मसल रिजिडिटी, टोन, aggressive posture, loud voice, disinhibited behavior और throwing of objects। पेशेंट की इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी, ईयूपीडी जिसको हम बोलते हैं, कि कहीं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की साइड एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट तो नहीं है, ठीक है। स्पेशली हार्म टू अदर्स के लिए अगर हम बात करें तो एंटी सोशल ट्रेट्स आर समथिंग यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, स्पेशली अगर देखें तो मेल जेंडर, यंग मेल जेंडर को हम ज्यादा कोरिलेट करते हैं कि वायलेंट बिहेवियर के साथ। सब्सटेंस यूज तो नहीं है, कोई एक्सेस टू लीथल मीन्स तो नहीं है, घर में ही चाकू तो नहीं पड़ा, घर में पिस्टल तो नहीं पड़ी है, तो ये सारी चीजें भी यू शुड कीप इन माइंड। Next, we are going to move towards what are the diagnostic investigation which you should keep in mind for emergency settings. बेसिक इन्वेस्टिगेशन हर लैब में होता है, सीबीसी होता है, एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है, एलएफटी के एफटी थायराइड प्रोफाइल ठीक है। ECG and X-ray if you are suspecting any CVS और या फिर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, हाइपोक्सिया का केस तो नहीं है, ड्रग ओवर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ठीक है ना, ओवरडोजिंग या विड्रॉल का केसेस में इट इज वेरी नेसेसरी। Next is your urine drug screening. We have in our hospital as well. So urine for drug screening में at least there are certain, हर drug का एक time period होता है, patient ने suppose आज कुछ नशा नहीं किया, कल किया होगा तो वो भी आ जाएगा। So there are certain drugs which up till 48 hours, some drugs are there for 72 hours, some might be for 1 week, can come in urine. Okay. Then very important is CPK, serum creatinine phosphokinase. आपका antipsychotic drugs, especially first generation antipsychotic drugs, are notorious in causing increase in CPK level. तो ये high जो level होता है CPK का, this is suggestive of neuroleptic malignant syndrome. Along with the patient को fever होगा, autonomic instability होगी, rigidity होगी, tremors होंगे, ठीक है। हो सकता है सडन दवाई का डोज बढ़ाया हो या चेंज किया हो कोई एंटीसाइकोटिक, तो एट दैट टाइम ये सजेस्टिव है। सीरम लिथियम लेवल, अगर आप लिथियम टॉक्सिसिटी सजेस्ट कर रहे हो, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है डिहाइड्रेशन के साथ, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कि बहुत कोर्स ट्रेमर आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपका जो ओरिएंटेशन में है, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो सीरम लिथियम लेवल। न्यूरो इमेजिंग स्पेशली आपका इमरजेंसी सेटिंग में सीटी स्कैन या एनसीसीटी स्कैन प्रेफरेबल है, बिकॉज एमआरआई इज गोइंग टू टेक टाइम, पेशेंट माइट नॉट कोऑपरेट, सर्टेन पेशेंट माइट कोऑपरेट या फिर थोड़ा सा रेशन के साथ सीटी स्कैन करवा ले। एंड ईजी इफ यू आर सस्पेक्टिंग कोई सीजर एक्टिविटी तो नहीं रही है। Now again management part in emergency is something you should keep in mind। emergency में management करना है, पेशेंट को साइकेट्री वार्ड रेफर करना है, या पेशेंट को किसी और मेडिसिन या न्यूरो वार्ड रेफर करना है, पेशेंट इमरजेंसी से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये 3-4 चीजें इसको ध्यान में रख के इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा। Management in emergency setting aims to stabilize the patient until they can either be transferred to another specialty department or can be discharged with follow-up advice. Patient is usually observed for a given amount of time in emergency department. Every hospital have a different settings. कुछ hospital बोलते हैं कि within 24 hours patient को दूसरे department में shift कर देना होता है, कुछ patient बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके within 2 hours 3 hours, अब decide करिए क्या है। कुछ पेशेंट, कुछ हॉस्पिटल्स बोलते हैं बेड अवेलेबल नहीं है और डिपार्टमेंट में, तो यू कैन कीप पेशेंट, यू कैन एडमिट द पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एज वेल फॉर से 48 hours 72 hours एक्सेट्रा। ओके, now very important is de-escalation। de-escalation, verbal de-escalation is something, किसी भी दवाई को देने से पहले, इंजेक्शन देने से पहले या पेशेंट को रेस्ट्रेन करने से पहले you should try de-escalation technique, that is you should try to calm down patient by talking। okay, use a calm non-threatening approach, maintain, obviously you have to keep your safety also in mind, maintain a safe physical distance and avoid confrontational language। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर आप हम देखें तो लोराज़ेपाम दे सकते हैं, या तो 1 से 2 मिलीग्राम IVIM, कोई भी बेंजोडाइज़ेपिन, लोराज़ेपाम नहीं है तो कोई और बेंजोडाइज़ेपिन भी दे सकते हैं।
Very commonly used is haloperidol and promethazine combination for very violent, actively psychotic patient. At times, olanzapine IM injection, or if patient is willing to take oral medication like risperidone, olanzapine can be given. Okay. Other than that, if उसके बाद decide करिए patient को कोई और psychotropic medication required है कि नहीं. Physical restraint, okay, this is a 4-point restraint technique. This is how patient is restrained. 2 point भी हो सकता है, 4 point भी हो सकता है. 2 point होगा तो एक ऊपर का हाथ नीचे का पैर होगा, 4 point होगा तो दोनों ऊपर के हाथ और पैर होंगे. Some things to be kept in mind. Physical restraint का consent sign करवाना है nominated representative से. Patient तो नहीं consent देने वाला. Okay. So the accompanying caregiver जो है, जो उसका nominated representative है या informant है, family member है, and every 24 hours, ये तो चलो emergency में तो 24 hours तक आप नहीं बांटने वाले. अगर आपको आज पेशेंट को रेस्ट्रेन किया है, कल के दिन फिर रेस्ट्रेन करना, तो उसके लिए नया कंसेंट लगेगा, एक कंसेंट नहीं चलेगा. इन बिटवीन द कंसेंट रेस्ट्रेन ऑल्सो आपको पेशेंट के मॉनिटर करने हैं वाइटल्स. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इज नॉट विलिंग टू टेक इंजेक्शन ऑल्सो. उसको रेस्ट्रेन करते हो, आप इंजेक्टेबल देते हो, पेशेंट सो जाता है, शांत हो जाता है, प्लीज ओपन द रेस्ट्रेन. ओके. दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. Usually the last resort, consent to be taken place in a safe, quiet room with minimal stimuli. Now, indication for admission. Again, 2-3 things. कि severe psychotic episode आया है, severe crisis, कोई भी crisis situation है, posing a risk to self, risk to harm to others. ठीक है. Maybe diagnostic clarification के लिए admission चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे है. Structured monitoring and intensive treatment is required. Okay. Patient is very is unable to take care of self. बहुत ही ज़्यादा what we call inability to for self care, suicidal intent है, psychotic symptom है, नहीं ध्यान रख रहा है, खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा है, नहाने का ध्यान नहीं रख रहा है, कहीं भी wandering behavior है, भाग जा रहा है, तो relatives ऐसा है कि हमें patient admit करना है, तो at that time patient can be admitted in psychiatric ward. Now keep in mind some medical legal aspects कि एक तो voluntary admission होता है जहाँ पे adult patient का खुद का consent है और खुद की capacity है regarding illness decision में बताने की. ठीक है. वो capacity is something where patient understand what kind of illness he or she is. He understand what kind of treatment he or she requires. He understand that whatever is conveyed, whatever you convey to the patient, patient is able to convey it back to you by drawing a meaningful conclusion of the same. ठीक है. इनवॉलेंट्री स्पेशली मेडिकल लीगल केसेस में होता है, या फिर पेशेंट में कैपेसिटी नहीं है. ठीक है. पेशेंट में इंसाइट ही नहीं है, इलनेस को लेके पता ही नहीं है क्या करना है, तो ये इनवॉलेंट्री एडमिशन है. यहाँ पे जो पेशेंट का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव या फैमिली मेंबर है, ही कैन एडमिट द पेशेंट. सी, एडमिशन इन साइकाइट्री वार्ड इज डिफरेंट देन अदर वार्ड का एडमिशन. जब से मेंटल हेल्थ केयर एक 2017 आया है, 2017 आया है, तब से आपका एडमिशन ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोई भी घर वाला लाके पटक देगा इमरजेंसी सॉरी साइकाइट्री डिपार्टमेंट में. नो, दिस फॉर्म शुड बी साइंड. ओके. देन initiate psychotropic medication based on diagnosis. Multidisciplinary approach, again आपका psychiatrist, psychologist, nursing staff, and again you should keep in mind कोई harmful object तो नहीं रखा है patient के पास. Patients with psychiatric illnesses are not immune to medical condition. I have told it to you earlier also. At that time, कभी-कभी ऐसा भी आएगा कि पेशेंट को विदहोल्ड करानी है, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट में था, कुछ एडवर्स इफेक्ट आ गया, तो सारी दवाइयां बंद करके सिर्फ आईवी फ्लूइड चल रहा है, सिर्फ उसको मेडिकल मैनेजमेंट में रख रहा है. तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग द पेशेंट इन साइकाइट्रिक वार्ड, पेशेंट माइट रिक्वायर एडमिशन इन हाई डेंसिटी डेफिनेशन मेडिसिन यूनिट. ओके. पेशेंट माइट रिक्वायर्ड आईसीयू ट्रीटमेंट अगर सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी या एनएमएस का पेशेंट है. ठीक है. समटाइम पेशेंट में टेक डायरेक्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑल्सो. कब कर सकता है? अगर सपोज आपका कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसको आप बोलते हैं, या डिसोसिएशन का पेशेंट आ रहा है, ठीक हो गया, थोड़ी देर बाद वाइटली स्टेबल है, सब कुछ है, घर वाले नहीं जा रहे हैं, हम ले जाना चाहते हैं, तो पेशेंट को, इफ पेशेंट इज स्टेबल, यू कैन डिस्चार्ज द पेशेंट. Now, patient should not possess any immediate risk of harm to self or other. Good medication adherence and insight into the illness, adequate and social support and supervision, and refusal for the observation or treatment by the patient or the attendant. डिस्चार्ज में आपको मेडिकेशन प्लान अच्छे से लिखना है, कब फॉलो अप के लिए आना है ये अच्छे से लिखना है, वार्निंग साइंस क्या हो सकती है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, ये सब लिखना है. फॉलो अप प्लानिंग में आपका कि ओपीडी साइकेट्री ओपीडी में आना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, दिस शुड बी मैनेज्ड, दिस शुड बी रिटन. देयर आर सर्टेन लीगल एस्पेक्ट
इफ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2070, वो बोलता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 72 आवर्स या उससे कम का ही ट्रीटमेंट होना होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट भी तभी करना है जब एट ऑल नेसेसरी है, अगर हार्म टू सेल्फ अदर्स है या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया तभी, ठीक है। Again, we have already talked about the admission, independent admission. There is also criteria called admission of minor. Patient 18 साल से कम है। तो psychiatrist MSc बोलता है एक separate ward होना चाहिए बच्चे के लिए, which should be separated from the adult psychiatry ward. और वहाँ पे पेशेंट का कंसेंट, तो बिकॉज माइनर है तो उसका जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका कंसेंट, एंड पेशेंट शुड असेंट, यदि उसको एग्री करना चाहिए कि मैं अगर समझदार बच्चा है तो, ठीक है। हाई सपोर्ट नीड, यहाँ पे पेशेंट को इनवॉलंटरी एडमिशन जिसे हम बोलते हैं। There are certain thing called admission or order of magistrate. Any individual जो कि मैजिस्ट्रेट के वाया रेफर किया गया है तो 10 डेज तक उसको ऑब्जर्व करना है, उसको इवेलुएट करना है, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होती है मैजिस्ट्रेट को। उसके बाद लीगल एक्शन होता है कि पेशेंट को क्या करना है, एडमिटेड रखना है कि कहाँ भेजना है ट्रीटमेंट के लिए, वो लीगल प्रोसीजर है। So to conclude up, you should all be aware कि psychiatric emergencies require a very prompt and structured assessment and management. Safety of the patient and healthcare provider and other associated members should be taken into consideration. Thorough psychiatric, medical, neurological, everything, every checkup and assessment should be done, and whatever management is required should be taken into consideration. And legal and ethical consideration are integral part of emergencies. Okay. So with this, I'll conclude. These are the references. Thank you.